all the friends over there who are joining today in this very live stream. So this is the day 15 or lecture 15 of our English language course, and today we are going to talk about starting conversation. We will talk about that if you are going to have a conversation with anybody, then how you have to start and what should be the starting, I should say, expressions, what should be the starting points, how, with which words you can start your conversation. So, my dear friends and dear learners, today we will be focusing on that how we have to start a conversation. So, first of all, जब हम conversation की बात करें, what actually is conversation? So, when we talk about conversation, तो आप यहाँ पे मुझे बोल भी देंगे इन कमेंट सेक्शंस क्या मेरी आवाज़ और मेरी जो जो यहाँ पे वीडियो ये क्लियर आ रहा है, खासकर जो आवाज़ क्या वो आप तक अच्छी आ रही है? आप अपने यहाँ पे जो चैट है उसमें यस लिख दें अगर वहाँ पे ठीक आवाज़ आ रही है, ओके? सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, क्योंकि जब हम कन्वर्सेशन की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट, ओके, ओके, यस, साउंड अच्छी आ रही है, सो वी विल गो। सो कन्वर्सेशन की पहले बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से दैट सर व्हेन वी स्टार्ट some type of conversation at the very first moment, क्या हो जाता है कि we get stuck somewhere, कि हमें पता ही नहीं होता है कि आगे हमें क्या करना है, what we have to do next। वहाँ पे उस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए वी विल कीप दैट पॉइंट इन माइंड दैट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इफ दे वांट स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद देयर फ्रेंड और एनीबॉडी एल्स, दे गेट स्टक, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, या तो वो पहले अटक जाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, व्हाट शुड बी द फर्स्ट एक्सप्रेशंस from where your conversation will start, or what will be the next thing if the other person is communicating with you, he has just answered your query or some particular expression जो आपने बोला उसको, तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, तो आपको क्या करना है। तो आज का जो वीडियो है हम थोड़ा फोकस करेंगे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, दैट when you want to have a conversation always mean that when you talk to any other person, जब दो लोग आपस में बात करते हैं ना, we simply call it as a conversation, they are conversating with each other, okay? So starting conversation, जब भी आप किसी से बात करेंगे ना, when we talk about English, जैसे हर किसी जुबान में जब भी हम किसी से बात करते हैं, we come with some greetings, सलाम दुआ जिसको हम कहते हैं ना, तो इंग्लिश में भी जब भी आप किसी से बात करें, you should first go for the greetings. Now, when we talk about starting a conversation with any particular greeting, what it should be like that? कौन सी greeting होनी चाहिए? So, आपके लिए वहाँ पे choice है. Talking about our this very area about Kashmir, because most of the people we are just Muslims and we can go with Islamic greeting. We can just start our conversation with right here assalamu alaikum, and the other person will say wa alaikum assalam. So this will be the simplest way to start a conversation, okay? Now if you want to go for a technical aspect of conversation, आप कहते हैं नहीं जी, अगर कोई भी बंदा अगला बंदा कोई भी हो, ही मे बी muslim or non muslim, I want to just conversate with the set rules of English, तो वहां पे क्या होता है, you have to keep in time in mind, तो टाइम का आपको ख्याल रखना होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन इन इंग्लिश विद रिगार्ड टू पर्टिकुलरली इन इंग्लिश सेट प्रिंसिपल्स, वहाँ पे मॉर्निंग का अलग आपको ग्रीटिंग है, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग और फिर नाइट, जैसे आपको पहले ही पता है। अगर आप सुबह किसी से बात कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग इन योर स्कूल गए आप, वहाँ पे आपने टीचर के साथ या फ्रेंड के साथ स्टार्ट की वहाँ पे कन्वर्सेशन, सो द टाइम अकॉर्डिंग टू दैट वेरी यू हैव टू ग्रीट हिम गुड मॉर्निंग, ओके? सो यू आर मीटिंग एनी फ्रेंड, यू कैन स्टार्ट राइट अवे फ्रेंड्स के साथ जो होता है, जो आमतौर हम कहेंगे, यू कैन गो फॉर हाई एंड हेलो, हाई और हेलो, and then you will go for the time greeting, that is good morning. You can start with this also. अब यहाँ पे एक मसला है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हाई एंड हेलो आर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड with friends,
और अ पर्सन होम यू आर वेरी मच acquainted with, जिसको रिलेटिव भी कहते हैं ना, तो वहां पे तो फ्रेंड्स के साथ तो हाय हेलो आप स्टार्ट कर सकते, हाय हाउ आर यू और हेलो हाउ आर यू, व्हाट अबाउट योर असाइनमेंट, हैव यू डन दैट, तो ऐसा कुछ अगर होगा। लेकिन जो अगर टीचर्स आपको मिलेंगे ना, इफ यू वांट टू स्टार्ट a conversation with your teacher or somebody which is a respected person, you have to start with this very thing. Either it may be the Islamic greeting, Assalamu alaikum, or you can shift to that this very English well set greetings according time. That means good morning. फ्रेंड्स के साथ हाय हेलो ठीक है, कोई मसला नहीं है वहाँ पे, हाय हेलो, तो वो ठीक रहता है, दैट इज क्वाइट गुड। बट विद अ पर्सन who is a respected one, it may be your teacher, it may be your elder one, it may be any other one whom any official from your school and all that, so better would be you go for in the morning you will say good morning, and from there it will be a very good morning, then you will start. Okay, so the first step in starting a conversation is to greet the other person. आपको दूसरे बंदे को greetings के साथ उसकी शुरुआत करनी है conversation की। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि if you are meeting a friend, if you are meeting a relative rather, you can just go for hi and hello, there is no such case of आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, because when you are talking to your friend it is quite a bit okay starting with hi hello, okay. But if you are talking to a teacher or any other respected person, go for the well set Islamic greeting, assalamu alaikum and all that. Even though with the friends also we can go for with the Islamic greetings, but talking about this very English well said principle, it will be according time. If it is morning you will say to the teacher and all that, good morning sir or good morning ma'am, and then there will be a reply. And if you need to have a conversation, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ बात करूं related to that, and then you can move on, आप आगे जा सकते हैं, फिर वो बात कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम बात करेंगे गुड मॉर्निंग या टीचर्स की, लेट्स टॉक अबाउट हैविंग ए कन्वर्सेशन और स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, आप स्कूल में गए या कहीं पे आपको मिला, एंड यू वांट टू कम्युनिकेट विद हिम और हर इन इंग्लिश, so what will be the step you will follow and how you will conversate with him or her, so that he or she will be in a good mood to communicate with you or go conversating with you। वहां पे उसको भी नहीं लगना चाहिए नहीं ये स्टक हो रहा है कहीं पे, या ये कहीं पे ज्यादा मानो तेज बोल रहा है या कहीं पे बात ही नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे एक बिल्कुल एक प्रॉपर वे के साथ आपको स्टार्ट करना होता है, तब जाके जो दूसरा बंदा होता है ही फील और शी फील कंफर्टेबल टू टॉक विद यू। सो फर्स्ट स्टेप विल बी ग्रीटिंग। So take for granted we are talking to a Muslim, so we will say assalamu alaikum and then it will be walaikum assalam अगला बंदा। और उसके बाद मान लीजिए अब आप स्कूल में आपका दोस्त सामने है, आप उससे कह रहे हैं आप कल असाइनमेंट दिया गया था, यू विल आस्क हिम हाउ अबाउट और हैव यू डन योर असाइनमेंट। सिंपल से वर्ड्स यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आपको थोड़ी सिचुएशन से, हैव यू डन योर असाइनमेंट, तो वहां पे आंसर वो देगा या देगा यस आई हैव डन माई। Yes, there is some issue slightly.